with the insertion of the elite Marine Commandos into the operational theatre. The quietness of the sea is broken by the deep thrum of the Sea King helicopter. The helicopter hovers steadily above the assault craft. Stand by for insertion comes the call. Doors open and the slithering rope drops down. It sways in low and steady. Only precision and practice can perfect this complex maneuver, which demands nerves of steel from the pilots and the Marine Commandos to overcome all adverse elements. One by one, you will see the Marine Commandos led by Lieutenant Commander Sopan Krishagar gripping the line and slithering down in smooth controlled bursts. Boots landing firmly on the assault craft's deck. The boarding phase of the operation now commences. Shift focus now to the hijacked merchant vessel. The high speed. Direct your attention to the screen, ladies and gentlemen. We are witnessing one of the most daring and spectacular segments of today's demonstration, the combat freefall by the elite Marcos, led by Commander Rohit Singh. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ പ്രദർശനത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരവും കാഴ്ചയിൽ അത്യന്തം മനോഹരവുമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മെറൈൻ കമാൻഡോസ് കമാൻഡർ രോഹിത് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കോംബാറ്റ് ഫ്രീ ഫാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. मरीन कमांडोज अपने पैराशूट का उपयोग करके ड्रॉप जोन की ओर नियंत्रित कॉम्बैट फ्री फॉल को अंजाम दे रहे हैं. वास्तविक युद्ध में इसका उपयोग दुश्मन के क्षेत्र में उतरने के लिए किया जाता है. And there, the first Marco has landed with precision. With the wind roaring past them, the Marco is steering his body with surgical precision, guiding himself to the drop point, and there, landing with utmost precision. मार्कोस कौशल के साथ ड्रॉप जोन पर उतरते हुए साहस और कौशल के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नौसेना के मरीन कमांडोज का जोरदार तालियों से स्वागत करें. Meet the elite warriors, the Marcos, approaching on the stage right in front of you. The Marcos are the only special force in India specialized to operate in all three domains: air, land, and water. बहादुर मार्कोस मंच पर माननीय राष्ट्रपति महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करने को कूच कर रहे हैं. There, ladies and gentlemen, you can see that our warriors have been successfully extracted and are now being flown to a safer location. स्टाई स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन वह साधन है जिसके द्वारा ऑपरेशन पूरा होने पर कमांडो को तेजी और सुरक्षित रूप से लड़ाई के क्षेत्र से निकाला जाता है. Drawing your attention again to the oil rig where the team of divers have set up the charges. Hold your breath and witness the effect. There we have it, ladies and gentlemen. That's how we do it. Our underwater warriors have successfully destroyed the enemy oil rig.
कमांडोज ने सफल